Hello. In this lecture, we will discuss about the basics of website. Like as you know that internet is very famous nowadays, and we are browsing hundreds of websites on it, right? So you all know the basics of websites and all. Let us start this thing about this lecture about our basics of website. Like what is actually a website? What does it includes? It consists and all of these. So website is what? Website is our collection of web pages, right? It has collection of web pages that are related through hyperlinks and saved on a web server, right? So this thing you have to learn by yourself. Like website में क्या है बहुत सारे web pages होंगे that are related through some hyperlink and that are saved on a web server, right? Website एक क्या है collection of web pages and this is another definition. So that is related content that is identified by a common domain name. Right, common domain name होगा उसके पास and it is published on at least one web server. Alright, this is our website. So website is hosted on a particular server. कोई particular server पे वो host होगी website, ठीक है, handling the different pages और उसमें बहुत सारे web pages होंगे that are linked together. अब कोई पेज है वेबसाइट का, सो इट इज नोन एज अ वेब पेज. एंड वेब पेज क्रिएट कैसे होगा? बाय HTML क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. So all of these pages are linked by different hyperlinks. Okay, so this is our definition of website. Now the purpose. Like purpose क्या है हमारा website होने का, क्या कहाँ पे यूज होती है? सो इट इज यूज टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द पब्लिक, जैसे ब्लॉग्स की फॉर्म में. एंड ब्लॉग्स क्या कर रहे हैं? दे विल प्रोवाइड अस द नॉलेज. देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जैसे ईमेल है, चैट है, वीडियो कॉल्स है. सो वेबसाइट प्रोवाइड दी सर्विसेज. नाउ द एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में कैसे वेब सीरीज चलती हैं, राइट? एजुकेशन में PDF है, PPT है, वीडियोज है, राइट? नाउ सप्लाई सॉफ्टवेयर्स सप्लाई कर सकते हैं, लाइक सर्विसेज प्रोडक्ट्स लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट. ओके, so this is the purpose of having website with us. Now a web page, like हमने क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट MS वर्ड में या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में, तो सॉफ्ट लाइक हमारा पेज में क्या हो गया, अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, फॉर्मेट होता है टेक्स्ट में, है ना? तो इसी तरह से वेब पेज भी क्या है, एक पेज है HTML डॉक्यूमेंट का, और जिसमें अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग होते हैं, कंटेंट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर HTML एंड CSS, राइट? अब एक टिपिकल वेब पेज के पास क्या है? मेन थिंग्स, टेक्स्ट होगा, उसमें हाइपर लिंक्स होंगे, इमेजेस होगी, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, राइट? और टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस आर देयर स्टैटिक एंड डायनामिक. सो स्टैटिक में क्या होगा? स्टैटिक इज क्रिएटेड बाय योर HTML लैंग्वेज, बट उसमें क्या होगा? टेक्स्ट होगी, इमेजेस होगी, ऑडियो वीडियो लिंक्स इंक्लूड होंगे. अब ये पेजेस में क्या है, कोई भी एनिमेटेड कंटेंट नहीं होता, राइट? they all are just hyperlinked and the user could not interact on these pages with button clicks. या कोई भी अगर वो इनपुट डालेगा तो फिर वो इन सारे पेजेस पे इंटरेक्ट नहीं कर सकता. यूजर कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, सिर्फ लिंक पे क्लिक कर सकता है, राइट? अब स्टैटिक वेब पेज में क्या होगा? दे आर रेंडर टू द क्लाइंट, ये यूजर, ओके, एंड इट इज सेव्ड ऑन योर सर्वर. अब सारे यूजर्स जो होंगे वो सेम ही कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? क्योंकि वहां पे सिर्फ दे प्रोवाइड अस द लिंक्स ओनली. अगर कोई और हम इनपुट डालते हैं तो हमारा कोई अलग पेज सामने आता है, राइट? तो इनपुट का सिस्टम कुछ नहीं है, दे जस्ट प्रोवाइड अस द लिंक. लिंक में जो भी होगा वो पर्टिकुलर पेज ही आएगा, राइट? एंड these pages are saved with your extensions .html. Okay, now the dynamic means this web page provides us a better user experience, क्योंकि different users जो है access कर सकते हैं हमारा खुद का version web page का, right? अब it is available in different बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनके थ्रू हम डायनामिक वेब पेज बना सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, ASP. एक्टिव सर्वर पेजेस
Java server pages, your hypertext preprocessor, Python, Ruby, etc. So in सब languages के through हम dynamic web page बना सकते हैं, right? And next thing is we have our web server component of our website. So web server means it serves all the contents. Website के सारे contents जो कि serve करे, that is our web server. Like you can take an example of a mall. Mall is serving all kind of product we need, right? Similarly, a web server is serving the contents on the internet. Internet पे जो भी content है, सारे के सारे content को serve करना is the function of our web server. Now a web server is just like a hardware or computer, right? जिसके पास सॉफ्टवेयर है और वेबसाइट है कंटेंट्स हो. अब वेब सर्वर क्या करेगा, अलग अलग यूजर से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, राइट? देन गिव देम रिस्पॉन्स, उसके अकॉर्डिंग है रिस्पॉन्स देगा. नाउ ईच सर्वर हैज इट्स यूनिक डोमेन नेम. ओके, सर्वर का भी एक यूनिक डोमेन नेम होगा. अब हर एक सर्वर इज कैपेबल टू हैंडल द HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर्स. लाइक सर्वर का काम क्या है, it accept the request from our client computers, right? So they are HTTP requests that are sent by our clients, and HTTP response means that is received by the server. Okay, and in this way a page server to the user. Okay, now a condition occurs like if a page is having issue with the URL में कोई issue है या कोई और issues में create हो रहा है, तो error 404 page not found ये line आती है, right? Web server इसको generate करता है this line, particular line, okay, and display to client browser. Then we have hosting a website, means website को हम कैसे host कर सकते हैं, right? So hosting means this is a process of making a website online. एक website को available कराना is our hosting. So they are hosting service provider who provide the service either free of course या paid hosting भी होती है, right? So hosting refers to a space provided on a specific server to store our particular website data. Means hosting का मतलब है कि एक space में मिल जाती है server में कि हम अपनी वेबसाइट को वहाँ डाल सकते हैं, राइट? सो वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स गिव एक्सेस टू द सर्वर रिसोर्सेज, जिसे रिसोर्सेज को एक तरह से एक्सेस देते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि आपके रिसोर्सेज हो गए रैम, हार्ड डिस्क, बैंडविड्थ. ओके, अब जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उनके खुद के वेब सर्वर्स हैं विद अ न्यूमेरिक एड्रेस जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं. ओके, और जो ये आईपी एड्रेस है दिस विल बी मैप्ड विद अ डोमेन नेम के साथ कंबाइन हो जाएगा, बिकॉज एवरी यूजर डू नॉट रिमेंबर द न्यूमेरिक एड्रेस. कि हर एक यूजर को कोई भी न्यूमेरिक एड्रेस याद नहीं रहेगा कि हमें उस वेबसाइट पे जाना है, तो कोई भी हम न्यूमेरिक एड्रेस याद रखें, तो इट हैज टू बी मैप्ड विद एक डोमेन नेम कि किस चीज से रिलेटेड है वो वेबसाइट, तो वो डोमेन नेम हमारा होना चाहिए फॉर अ मेंबर. Then how to host a website. So these are the steps. The first step, go and search for a hosting provider companies. कि कंपनीज जो भी प्रोवाइड करती हैं होस्टिंग, सो हमें उनके लिए सर्च करना है. देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी फाइंड अ सुटेबल डोमेन नेम. हमें डोमेन नेम को सर्च करके रखना है. देन रजिस्टर योर डोमेन नेम, ओके, विद योर डोमेन नेम रजिस्ट्रार. सो हमें अपने डोमेन नेम को रजिस्टर कराना पड़ेगा. देन हमें वो स्पेस मिल गई तो हम अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं. देन वी कैन अपलोड आवर वेबसाइट फाइल्स ऑन दैट स्पेस. देन आफ्टर दैट मैप योर डोमेन नेम विद द आईपी एड्रेस. ओके, आईपी एड्रेस के साथ हमें जस्ट मैप करना है हमारा डोमेन नेम. So the hosting providers also provide us the content management system, the CMS. Okay, that is managed to host like WordPress. So अब इसमें सारे के सारे provide करेगा domain name services भी. Okay, so this was all about your website, your hosting websites. Okay, thank you.